Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. और आज की इस session के अंदर what we are going to do, we are going to solve multiple past paper questions from the topic that is called the database. ठीक है? तो starting with the first question, बच्चों, एक question आ गया हमारे पास यहाँ पे. Bobby and Kim are discussing databases. Bobby tells Kim that the file-based approach is usually better than a relational database. Explain why Bobby is incorrect. तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है. हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हुई है. You just need to explain that stuff over here. Like in file-based approach, we have more data redundancy. That is the duplication of the data. Data may be inconsistent in file-based approach. Further, you can write, we cannot run complex searches in file-based system. Further, you can write lack of privacy issues since we only have one table. And of course, that one table is accessed by everyone. अच्छा जी, moving forward, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे थोड़ा सा और. अब ये बोलना है आप लोगों को एक सिनेरियो गिवन है. The scenario is Bobby has a shop that sells product to customers. His database will store data about the customers and their payment details, orders, and the product he sells. Customers will have login details to access their account. Database will update customers' payment and login details without keeping any historical records. Give one example of each of the following relationship between the Bobbies from the Bobbies database. One-to-one relationship. So every customer is having their login details. So customer to login details, one to many. Customer है बच्चों, order करेगा. So one customer can order many. So customer to order, and the last one, many to many. So we have many customers and we have many products. So you can see sells products to customers. So we have many products and we have many customers. So this will be many to many. Customer to products. Okay. Tick one box to identify the relationship that cannot be directly implemented. तो बच्चों मैं आप लोगों को क्लास में बार बार बता चुका हूं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. ठीक है. सो
This will be many to many. Moving forward, अब ये बोल रहे Bobby wants to name his database as shop orders. Write data definition language statement to define the new database with the name shop orders. So we just need to create the database, and you people know to create the database, the statement is create database. These are the keywords that we have. Create database, and the name of the database is shop orders. अब उसने नाम भी कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आप लोग भी क्या करो, उसी को कैपिटल में रखो, शॉप ऑर्डर्स, एंड एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट लगा दें, अच्छी बात है. सो वी आर डन, 1 मार्क. नाउ अब ये बता रहे हैं बच्चों, डाटा डिक्शनरी में बोल रहे हैं क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं. 3 items that are stored in data dictionary. So we have many things in data dictionary, like table name, like data type of the fields, ये भी mention कर देना, of fields. We have relationships between the tables. और भी बहुत सारी चीजें, like we have keys, primary key. आपके माइंड में बस होना चाहिए. That's why I'm writing, because we are having a revision session. तो इसमें हम लोग जितना मैक्सिमम, मैंने ये सारे क्वेश्चंस वो पिक करें जो पूरा आपका डेटाबेस रिवाइज करवा दें. मेरा मेन एम यही है कि पूरा डेटाबेस के टॉपिक, सारी क्वेरीज, सारी स्टेटमेंट्स, सारी थ्योरी रिवाइज हो जाए आप लोग की. प्राइमरी की, अनदर वन वी कैन राइट फॉरेन की, एंड सो ऑन. शामिर, पेज नंबर तो नहीं है इसका कोई. आई हैव शेयर दिस पीडीएफ विद यू पीपल ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. ठीक है, खैर ये एक लॉजिक गेट का सवाल ऐड हो गया, सो ये आप लोग खुद देख लेगा बाद में. टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग डेटाबेसेस. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, लेट्स सी बच्चों, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया हमारे सामने. लेट्स सी. Now, Javier owns many shops that sell cars. He employs many managers who are each in charge of one or more shops. He uses the relational database cars to store the data about his business. So we are having multiple tables, and आप लोग को यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की को जज करना है. सो देखो भाई, शॉप के टेबल में प्राइमरी की हाईलाइट कर दूं मैं सारी प्राइमरी कीज. लेट्स हाईलाइट ऑल द प्राइमरी कीज विद येलो. प्राइमरी की, मैनेजर के टेबल के अंदर द प्राइमरी की विल बी ऑफ कोर्स मैनेजर आईडी, एंड इन कार टेबल the primary key will be, I think registration number is fine for the primary key. Now we need to mention the foreign keys. So the first foreign key I can see in shop table is manager ID. मैनेजर के टेबल के अंदर I cannot see any, मुझे यहाँ पे कोई फॉरेन की नजर नहीं आ रही. And in cards table, I can see another foreign key. You can see shop ID again. So these are the foreign keys that we have. अब यहाँ पे mention कर दें जरा. Manager के table के अंदर we are having the primary key only. We don't have the foreign key. Shop के table के अंदर we are having primary key as well as foreign key. In card table, अच्छा सॉरी हमें बताना ये प्राइमरी की है या फॉरेन की है. सॉरी. सो शॉप के टेबल के अंदर मैनेजर आईडी इज अ फॉरेन की. कार के टेबल के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी प्राइमरी की, एंड कार के टेबल के अंदर शॉप आईडी विल बी फॉरेन की.
2 marks. Moving further forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब मलिक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अभी आएगा यहाँ पे आगे सवाल। अच्छा जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बोल रहे बच्चों डिस्क्राइब द वेज इन विच एक्सेस राइट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट डाटा in Javier's database from unauthorized access. So we can have 3 marks, we can have different access policies for different tables. Data can be protected using username and password. टेबल लिख देता ज्यादा बेहतर वर्ड होता, खैर चलें, डाटा भी फाइन. फर्दर another point that we can write, we can assign specific views to different users. एंड फर्दर बच्चों सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यू कैन ऑल्सो डिप्लॉय सीसीटीवी कैमरास एंड ऑल, सो यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब. हाँ, यस, वी कैन मॉनिटर द एक्टिविटीज एज वेल. Okay, let me share. Okay, अब ये बता रहे बच्चों जेवियर्स डेटाबेस, data definition language and data manipulation language statements are used. Complete the following to return the number of cards for sale in each shop. So we need to count the number of cards. तो बच्चों गाड़ी की गिनने के लिए the best thing that we can have is the registration number. So select count registration number, and from the table that I'm going to use will be car, of course. So from car, and now मुझे मल्टीपल शॉप्स में एक गाड़ी खड़ी हो सकती है आपके पास. सो वी आर गोइंग टू यूज ग्रुप बाय स्टेटमेंट. ग्रुप बाय की स्टेटमेंट क्या करेगी बच्चों, एक गाड़ी अगर दो शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है तो वो उसको एक ही दफा रिप्रेजेंट करेगी. सो दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ग्रुप बाय. अब देखिए ग्रुप बाय को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं. मैंने बोला मुझे सारे बच्चों के नाम डिस्प्ले करवाओ जो
हॉकी एंड लेट्स से फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल की टीम में। अब एक स्टूडेंट था मेरे पास, वो यहां पे भी था, यहां पे भी था। इसका नाम था लेट्स से एक्स। अब अगर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा हॉकी की टीम तो इसका नाम भी डिस्प्ले हो जाएगा, अगर मैं फुटबॉल की टीम भी डिस्प्ले करवाऊंगा इसका नाम फिर डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेटा रिडंडेंसी आ रही है। तो ग्रुप बाय की स्टेटमेंट क्या करेगी बच्चों, सिर्फ एक दफा इसका नाम डिस्प्ले करेगी। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ग्रुप बाय स्टेटमेंट। तो वो गाड़ी क्या करेगा, एक दफा काउंट करेगी गाड़ी का नंबर, काउंट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम कार ग्रुप बाय शॉप आईडी। मूविंग फॉरवर्ड, अब बच्चों ये बोल रहा है कि नाउ यू नीड टू इंसर्ट द डेटा। तो यू पीपल नो टू इंसर्ट द डेटा, द स्टेटमेंट इज इंसर्ट, ये स्टेटमेंट सारी याद होनी चाहिए आपको, इनटू कार्ड एंड वैल्यूज। So these are the values that we are going to enter in the table that we have. Moving forward बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब let's see, we have another question. Match the best option, आसान सा सवाल है। Any object or thing about which it is possible to store data. So that is of course tuple, oh sorry, entity। एंटिटी क्या होती है आपके पास, हम टेबल से भी रेफर करते हैं एंटिटी को। एंड एंटिटी इज एक्चुअली एनीथिंग अबाउट विच वी कैन स्टोर डाटा, लाइक अ टीचर, स्टूडेंट, टेबल, लैपटॉप, कार, किसी भी चीज के बारे में अगर आप लोग कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, सो वी कॉल दैट स्टफ एज एन एंटिटी। अ डाटा सेट ऑर्गेनाइज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स, सो ऑफ कोर्स दैट इज टेबल। Any attribute or combination of attributes that can act as a unique key। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इस वाले पार्ट को जनरली प्राइमरी की असाइन कर देते हैं। बच्चों दैट कैन बी, दैट कैन एक्ट एज अ यूनिक की, तो मतलब देयर कैन बी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, so this is candidate id, attribute in the table that links to the primary key of one table to the that is foreign key of course. And the last one, attribute or combination of attribute that is used to uniquely identify a record. So this is the definition for the primary key. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे मैं मूव करता हूं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है एक्सप्लेन द वर्ड, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है बच्चों आपके पास, ensures data is consistent in related tables। So data should be बच्चों consistent in your tables। रिलेटेड टेबल्स के अंदर आपका डाटा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। सर सिर्फ 3 मार्क्स का सवाल है और क्या लिखे, सो यू कैन टॉक अबाउट कैस्केडिंग अपडेट। कैस्केडिंग अपडेट क्या होता है, इफ we update data in one table, it should be updated in the related table as well। Similarly, you can talk about cascading delete।
अब अगर आप किसी टेबल से कोई डाटा डिलीट करते हैं, सो रिलेटेड टेबल में भी क्या होना चाहिए, आपका डाटा डिलीट हो जाना चाहिए. इफ वी डिलीट data from one table, it should be deleted in the related table as well. So I think that's more than fine for 3 marks. Moving forward. नहीं, Hassan, they both are different. Cascading update and cascading delete, they both are different. Okay, moving forward. Another question that we have. Let's see. A field in one table that links to the primary key of another table. So that is the definition for the foreign key. A collection of records and fields. So that is, I think, the definition for a table, but table to nazar nahi aa raha hame kahin yahan pe. A type of data that is being stored. Nothing. Unique identifier for each tuple. So that is the primary key. That is the primary key. Data item represented as a field within a table. Data item represented as a field in a table. So field को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? एक field को हम लोग क्या कहते हैं? We call it attribute. और record को क्या कहते हैं? Tuple as well. We call record as tuple as well. Entity, the concept or the object in the system about which we can store data, that is called an entity. 4 marks. Identify 3 tasks that Sheila can perform using DBMS developer interface. So developer interface के अंदर like developer interface होता क्या है? पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए ना, the place where you write the code. आप जहां पे कोडिंग करते हैं, आप अपनी queries लिखते हैं, like create, select from, where, inner join, select, update, delete, create database. So that is the platform, the screen, the place where you write the code is called developer interface. तो वो 3 task क्या perform कर सकते हैं? So she can create a table with the help of the query. She can create relationships between tables, and of course she can write a query. She can also generate a report. वो एक report भी generate कर सकती है आपके पास. So these are the things that she can perform. Moving forward. Okay, we have a table. हमें यहाँ पे बच्चों complete करना है यहाँ पे. Let's complete this table. We need to create a room. Room create करना है. So we need to create the table room. So आप लोग को पता है create table.
तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, क्रिएट टेबल रूम, रूम नंबर इंटीजर, रूम टाइप, room type. You can see room type, that is varchar. Varchar, no need to define the specific characters. And the last one बच्चों, दो ही fields है हमारे पास, so this will be the primary key. And we have 3 marks. Moving forward, अब ये बोले बच्चों, now you need to enter data. Room number 5 and the room is double room. Room type is double room. So insert into room, and the values that we are going to find 5 comma double. You can use single inverted comma as well. आप single inverted comma भी double के ऊपर use कर सकते थे, and you can also use double inverted commas as well. Both are fine over here. Now moving forward बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब 2 marks. ये बोल रहा है from the table booking need an additional field to store the number of nights. For example 3, मतलब data type क्या होगी, integer होगी. For a customer staying. So now आप लोग को इस टेबल के अंदर एक और फील्ड ऐड करनी है. So the statement is called alter table. Alter table. The name of the table is, let's see, room. Alter table room. Now we need to add. So add, क्या ऐड करना है, फील्ड ऐड करनी है, नंबर ऑफ नाइट्स. अच्छा बच्चे क्या करते हैं, जनरली मैंने एक मिस्टेक देखी है, नंबर ऑफ नाइट्स, अब ये फील्ड का नाम है, इसमें स्पेस दे देंगे, नंबर ऑफ नाइट्स स्पेस दे दी. भाई दिस इज नॉट फाइन, गलत है, ये स्पेस नहीं होती फील्ड के नाम के अंदर. सो नम नाइट्स and the data type of course will be integer. End of line statement and 2 marks. Moving forward, let's see another question. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों. अब मोहित नहीं बेटा, अवॉइड अंडरस्कोर वैसे तो यूज कर सकते हो, कोई हार्म नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक कि नहीं यूज करो. डोंट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी इन योर कोडिंग, इन योर स्टफ. कोई हार्म नहीं है अगेन, लेकिन अंडरस्कोर यूज ना करो, ज्यादा बेहतर है, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है. ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन. सर ऐड के बाद कॉलम नहीं लिखेंगे. नहीं इजा बेटा, नो नीड. अच्छा, ये इजा ने सवाल क्यों करा, मैं आप लोग को जरा बताता हूं. इजा ने सवाल किया हमें हमारे पास यहाँ पे कि सर ऐड कॉलम और फिर नम नाइट्स इंटीजर लिख दें. सो देखिए, दिस इज अ वेरी रिसेंट पेपर, 2020, आई थिंक 2020 है, 21 है, 21 अक्टूबर नवंबर का पेपर है आई गेस. तो बड़ा रिसेंट पेपर है ये. अब एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में एसक्यूएल बोला, उसने बोला कि आप लोग एसक्यूएल की क्वेरीज को लर्न करें. यू शुड लर्न द क्वेरीज फॉर एसक्यूएल, माई एसक्यूएल. अब ये वेरी कर रही होती है आपके पास बच्चों, एसक्यूएल के डिफरेंट वर्जन हैं, एसक्यूएल 2.3, एसक्यूएल 4, एसक्यूएल 5. सो मैंने जो आप लोग को एसक्यूएल की क्वेरीज लिखवाई है वो लेटेस्ट एसक्यूएल की क्वेरीज लिखवाई है. अब अगर 2016, 2017 की किसी मार्किंग स्कीम के अंदर ऐड कॉलम भी लिख दिया गया, तो वो भी स्टेटमेंट करेक्ट है. और आपने अगर सिर्फ विदाउट राइटिंग ऐड कॉलम आपने डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखी, दैट इज आल्सो फाइन. सो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. बोथ स्टेटमेंट आर फाइन. अगर आप ऐड कॉलम लिख के भी कर दें तो वो आई थिंक एसक्यूएल
2.0 या 3.0 वर्जन के अंदर आपके पास वो स्टेटमेंट लिखी जाती थी पहले, लेकिन अब वो हटा दिया गया। अब जो लेटेस्ट आपके पास MySQL की जो स्टेटमेंट है, तो वहां पे हम सिर्फ ऐड लिख के और आगे फॉरवर्ड करते हैं। और अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे तो एग्जामिनर ने कॉलम का वर्ड यूज नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अली जगाम ने एक और सवाल कर लिया बच्चों, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। इन्होंने बोला सर वार 4 में लिमिट नहीं लगाएंगे? नो नीड। अगर मैं लिमिट डिफाइन नहीं कर रहा, दिस मींस आई हैव डिफाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो नो नीड टू डिफाइन द लिमिट। वार 4 लिख के छोड़ दें। कोई कोई जरूरी नहीं होता आपके पास कि आप हमेशा लिमिट डिफाइन करो। अच्छा जी, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो बच्चों अगेन दैट्स द थ्योरी, थ्योरेटिकल स्टफ जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली पहले भी कवर अप किया है। सो यू कैन राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स। थ्योरी आप लोगों को क्लास में मैंने लिखवाई भी है, आप लोग ये नोट से देख के खुद ही कॉपी कर लेगा। अच्छा जी, लेट्स मूव। आज असल चीज के ऊपर आते हैं। The design of the surgery database, the name of the database is surgery. PET. We have different fields. The primary key is also being defined. Appointment. Give one reason why database designed for surgery is not in third normal form. अच्छा जी, तो बच्चों यहां पे हमारे पास क्या आ जाती है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मलिक ने सवाल किया था सर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बता दे, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाती है। सर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? सर रेफर करके बताएं टेबल से। तो लेट्स सी दिस इज द टेबल। द नेम ऑफ द टेबल इज पैट, द प्राइमरी की इज पैट आईडी, एंड ऑल अदर फील्ड्स आर नॉन की फील्ड्स। सिर्फ एक प्राइमरी की है आपके पास। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? अ नॉन की फील्ड, एक नॉन की फील्ड एक और नॉन की फील्ड के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर जाए, डिपेंड करे एक दूसरे के ऊपर। एक नॉन की के ऊपर डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सर यहां पे क्या एग्जांपल होगी? सो यू कैन सी ओनर का फर्स्ट नेम विल बी डिपेंडिंग ऑन ओनर का लास्ट नेम। नॉन की फील्ड एक नॉन की फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, फर्दर ओनर का फर्स्ट नेम और उसका टेलीफोन नंबर क्या होगा? सेम होगा। नॉन की फील्ड एक नॉन की फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो दैट्स द राइट आंसर बच्चों ओवर हियर। एक नंबर दे रहा है देखो। सो आप बता देंगे ओनर फर्स्ट नेम। चले मैं लिख ही देता हूं, ओनर फर्स्ट नेम, एटलीस्ट 2 नंबर देने चाहिए थे, इज अ नॉन की फील्ड which is depending on another non-key field, that is owner last name. I think that's more than fine for 1 marks. Moving forward, एक नंबर के लिए मैंने ज्यादा ही लिख दिया वैसे फिर भी। अच्छा जी, अब बता रहे बच्चों डेटाबेस नीड टू बी नॉर्मलाइज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बोला इसको नॉर्मलाइज करना है। द पेट मे हैव मोर देन वन ओनर। A pet may have more than one owner. अच्छा, an owner may have more than one pet. ये बात तो समझ में आ रही है, ये बात समझ में नहीं आई।
एक पैट के एक से ज्यादा ओनर कैसे हो सकते हैं? चलें पढ़ते हैं आगे। द अपॉइंटमेंट टेबल डज नॉट नीड टू चेंज एंड हैज बीन रिपीटेड बिलो। गिव द नेम एंड एट्रीब्यूट of the three additional tables in third normal form. Identify the primary keys in each table. ठीक है, सो बच्चों हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी है यहाँ पे। वी नीड टू फिनिश दिस डिपेंडेंसी। सर डिपेंडेंसी क्या है भाई? ये डिपेंडेंसी है आपके पास, ये आपके पास डिपेंडेंसी है, ये आपके पास डिपेंडेंसी है, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो वी नीड टू रिमूव, ये टेलीफोन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, सो वी नीड टू रिमूव दिस डिपेंडेंसी। सो क्या कर सकते हैं? एक नया टेबल क्रिएट कर दें। सो आई नीड टू सी these tables, मुझे फील्ड के नाम देखने होंगे। सो लेट मी ब्रिंग these टेबल बिलो। मैं जरा इन टेबल को नीचे लेकर आ जाऊं, बिकॉज आई नीड टू कॉन्स्टेंटली, मुझे बार बार इनके नेम चेक करने होंगे फील्ड के। ठीक है भाई, सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट टेबल ओनर। इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक प्राइमरी की तो रखनी पड़ेगी हमें, तो मैंने ओनर आईडी इज सेट कर दी एज द प्राइमरी की। ओनर आईडी अंडरलाइन कर दूं, प्राइमरी की है। अब मैं यहाँ पे ओनर का फर्स्ट नेम हटा देता हूं। ओनर last name, and let's remove the telephone number as well. Now I can create the pet table, pet ID. This will be the primary key. Then we can have a pet name. Then we can have a pet breed. Everything, every field, every other field is depending now on the primary key. सब primary key के ऊपर depend करना चाहिए. Pet breed, pet, date of birth, telephone number. Oh no, telephone number नहीं आएगा. That's more than fine. And the last field, बच्चों, अब we need to create a relationship between these two tables. So how I can create a relationship? So मैंने एक बना दिया नया टेबल, pet owner table, and in this table I will be only deploying owner ID and pet ID, and both will be the, इन दोनों को मिला के आपकी प्राइमरी की बनेगी, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल्स। प्राइमरी की और फॉरेन की वाला रिलेशनशिप आपको यहाँ पे डेवलप करके शो करना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बोल रहे कि आप लोग को टेबल दे दिया गया अपॉइंटमेंट का। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स बोथ डीएमएल एंड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो एसक्यूएल है भाई वो तो, एसक्यूएल structured query language. You can write SQL as well, you can write the full form as well. Structured query language.
ओके अभी क्वेश्चन कैरी ऑन है। अभी बोले बच्चों राइट डाउन a DDL statement to update the table appointment to define appointment ID as the primary key. So alter table and the name of the table will be appointment add primary key and we need to add appointment ID as the primary key. So appointment ID. End of line statement, 2 marks. अमान तुम्हारे वाले पार्ट को अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। आगे मूव किया बच्चों। अब ये बोल रहे राइट डाउन द डीएमएल स्टेटमेंट script to display the times and the pet IDs. अपॉइंटमेंट के टेबल में टाइम की फील्ड को क्या बोला गया है भाई? अपॉइंटमेंट के टेबल के अंदर वी हैव टाइम, वी हैव डेट एंड पेट आईडी. सो सेलेक्ट टाइम एंड पेट आईडी फ्रॉम अपॉइंटमेंट. अच्छा जी, वेयर अपॉइंटमेंट डेट ये होनी चाहिए एंड स्टाफ आईडी शुड बी दिस. सो स्टाफ आईडी शुड बी इक्वल टू JK1 एंड डेट के लिए भाई क्या वेरिएबल फील्ड का नाम है? डेट ही है. दैट्स रॉन्ग, वैसे तो गलत है ये. एंड डेट शुड बी इक्वल टू 02/02/2021. Order by time, we need descending order to DESC. For ascending order ASC, for descending order DESC. And we are done with this part. 3 marks. So भाई ये स्टेटमेंट जितनी भी एसक्यूएल की हैं आप लोग को सारी स्टेटमेंट्स बच्चों याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए. Now in the last part बोले दो वेरिफिकेशन चेक. सो दो वेरिफिकेशन चेक हमारे पास दो ही होते हैं आपके सिलेबस के अंदर. द फर्स्ट वन इज डबल एंट्री एंड द नेक्स्ट वन इज विजुअल चेक. सो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स दैट आप डाटा जो है वो 2 दफा एंटर करवाएं एंड इट्स एन ऑटोमेटिक चेक. विजुअल चेक के अंदर आप बताएं कि इट्स अ मैनुअल चेक एंड यू कैन कंपेयर द डाटा जो आपने डाटा एंटर किया हुआ है. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड अनदर बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ये नोट से आप लोग कॉपी कर सकते हैं. मूविंग टू पार्ट बी. A relational database design need to be normalized. The following statement describes the 3 stages of the normalization. For database to be in first normal form, there must be no repeating group of attributes. For database to be in second normal form, it must be in first normal form and contain no partial dependency. And the last one, bacho, must be fully all attributes
must be fully dependent on the primary key. Wow, 4 marks. No, no, you cannot write checksum. Checksum, देखो, checksum is also, I know it's a verification method. Parity check, checksum is a verification method. लेकिन that is used for transmission of data. During the transmission of the data, अगर आपका data transmit हो गया है, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन या एट द रिसीवर साइड पे वेरिफिकेशन जब अप्लाई करना हो, सो वी कैन अप्लाई दीज टू टेस्ट, चेकसम और पैरिटी चेक, दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लेकिन अगर जब डाटा आप लोग इनिशियली डाटा एंटर कर रहे हो, सो डाटा एंटर करते वक्त चेकसम और पैरिटी चेक इज नॉट बीइंग अप्लाइड. वी अप्लाई डबल एंट्री या फिर वी अप्लाई विजुअल चेक. ठीक है, सो ये चीज एक अपनी क्लियर रखिएगा. ओ माय गॉड, बड़ा सा रिलेशनशिप डायग्राम आ गया हमारे पास. सो नो नीड टू वरी अबाउट. आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई है, जिस टेबल में फॉरेन की हो वहां पे क्या होगा, मैनी होगा. तो भाई ये ट्रिक हमेशा कामयाब रहेगी आपकी. सो सारी प्राइमरी कीज को मैंने खुद ही उसने किया हुआ आइडेंटिफाई, मैंने अंडरलाइन कर दिया सारी प्राइमरी कीज को. अब फॉरेन कीज को अंडरलाइन करता हूं जरा. मेंबर आईडी देखो देखो, मेंबर आईडी कहां पर है. So yes, we have the member ID right over here. So member और session में क्या रिलेशनशिप बन गया, 1 to many. member and member session उसने खुद ही बना दिया भाई ये रिलेशनशिप, और ये भी खुद ही बना दिया उसने, सेशन आईडी खुद बना दिया. अच्छा जी, अब आगे देखते हैं. कोई ना कोई तो रिलेशन होगा हमारे पास. ट्रेनर आईडी. सो मुझे मिल गया भाई पहला रिलेशन. यू कैन सी ट्रेनर आईडी इज द प्राइमरी की, एंड यहां पे इट विल बी एक्टिंग एज अ फॉरेन की. सो ट्रेनर और सेशन ट्रेनर में क्या रिलेशनशिप बन गए, 1 to many. अच्छा, मैं अभी आप लोग के पेपर्स चेक कर रहा था, तो बच्चों ने क्या किया हुआ है, बच्चों ने 1 to many कैसे शो किया हुआ है, यहां से लाए और यू बना दिया. भाई ये कोई पंजा नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं वो ईगल का क्रॉल नहीं है. सो इसको प्रॉपरली बनाए करें भाई इस शेप के अंदर. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, उन्होंने अजीबो गरीब, पता नहीं किसी ने यूं आके लाके, किसी ने यूं आके इसको ग्रैब कर लिया, किसी ने यूं पूरा इसको पूरा दिखा दिया. सो भाई प्रॉपर शेप बनाए करें. अच्छा जी, सेशन अगर आप लोग देखें यहाँ पे, सेशन की प्राइमरी की सेशन आईडी, और मेंबर सेशन के अंदर सेशन आईडी इज अवेलेबल. सो प्राइमरी की, फॉरेन की, 1 to many. तो शो कर दें. एंड आई थिंक बच्चों वी आर डन. इसके अलावा जितने रिलेशनशिप हैं एग्जामिनर ने खुद को शो किए. मैं मैनी टू मैनी आप लोग शो नहीं करते कभी, याद रखिएगा. राइट डाउन द डेटाबेस डेफिनेशन टू क्रिएट द स्पोर्ट क्लब डेटाबेस. सो क्रिएट डेटाबेस स्पोर्ट्स club. End of line statement, we are done. Now in the next part, we need to create this table. हमें ये टेबल क्रिएट करना है, तो आई वोंट बी वेस्टिंग मच टाइम. मैं जल्दी से ये टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ बच्चों आप लोगों को. क्रिएट
table, the name of the table is session, bracket open, the first field is session ID, and I think this will be the primary key as well. Session ID, this will be varchar. अब यहाँ पे मैं लिमिट लगा सकता हूँ बिकॉज इट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 कैरेक्टर्स. देख सकते हैं सारा डेटा इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 कैरेक्टर्स, so I can define 4. या मैं फिक्स लेंथ भी डिफाइन कर सकता हूँ. आई कैन डिफाइन 4 एज वेल. 4 से क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएंगे इसके. दैट विल बी, हमेशा इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आएंगे. अब बार चार के अंदर क्या होता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, वेरी करेगा. लेकिन इसमें क्या होगा, फिक्स 4 कैरेक्टर्स होंगे हमेशा. सो यू कैन डिफाइन 4 4. नहीं हिलाम बेटा, यू नीड लेंथ डिफाइन करना, इट्स नॉट कंपल्सरी. आप यहाँ पे सिंपल वार चार्ट भी रख सकती है. नाउ द नेक्स्ट field is description. And this will be varchar. Simple varchar कर दें इसे बच्चों. No need to define the length. Another बच्चों session date. So this will be date. Another is session time. This will be time. Another is member, number members. And this will be integer. And at last, you need to define the primary key. So primary key will be session ID. And bracket close, end of line statement, and we are done. नहीं अली सगाम बेटा, नॉट, नो नीड टू राइट नॉट नल. नॉट नल लिखने की कोई कंपलसरी कोई नीड नहीं है. नॉट नल हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लाइक द फील्ड मस्ट हैव अ डाटा. तो कोई कंपलसरी स्टेटमेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी करते हैं, नो इश्यूज. नाउ यू नीड टू राइट डाउन द query to return first name, last name of all members who have peak membership type. Membership type कहाँ है भाई? कोई और टेबल है क्या? Membership type. Okay, membership type, first name, last name. So the table name is member. So मुझे display करवाना है, and whenever you want to display the stuff, the statement is select. So select, you need to display first name. So first name, comma, you need to display the last name. So last name from member where membership type, I need to read the field का नाम बिल्कुल करेक्ट लिखा करें. Membership type is equal to peak. End of line statement, 3 marks. ठीक है. So a perfect reply to the examiner for scoring 3 marks. Okay, we have a question before we move forward. सर 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 कैरेक्टर्स हैं. हाँ देखो मलिक, 4 से क्या होता है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड बार 4. 4 का मतलब क्या होगा, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, सेशन आईडी एंटर कर रहा था, मैं डाटा एंटर कर रहा था, मैंने एंटर कर दिया लेट्स से 2p, तो वो ऑटोमेटिकली 2 ब्लैंक स्पेसेस ऐड करेगा
और 4 कैरेक्टर्स ही स्टोर करेगा। लेकिन अगर मैं varchar करता हूं तो ये लेंथ वेरी हो सकती है। अगर मैंने 2 कर दिया वो 2 स्टोर कर देगा, मैंने 2p कर दिया वो 2p स्टोर कर देगा, मैंने 2pl स्टोर कर दिया 2pl स्टोर कर देगा। सो वो वेरिएबल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है, लेकिन 4 के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर फिक्स्ड। मैंने डिफाइन कर दिया 4। अगर अब आप एंटर नहीं भी करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली उसको 4 कैरेक्टर बना के ही स्टोर करेगा। तो सर 4 कैरेक्टर, हमने तो कैरेक्टर ही नहीं डिफाइन किया, तो वो ब्लैंक स्पेस को एज अ कैरेक्टर काउंट करके और 4 कैरेक्टर बना के स्टोर कर देगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन varchar एंड char. I hope this sounds clear to you now. ओह रियान, तुम्हारा सवाल ना बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने पेपर दिया ना, वैसा सवाल है तुम्हारा। तुम अभी से वो टोटल मार्क्स निकालना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं भाई, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू स्कोर फुल। कोई थ्रेशोल्ड, कोई चीज के ऊपर फोकस नहीं करना। आप लोग की वर्डिंग बड़ी खराब मुझे नजर आई व्हाइल आई वाज चेकिंग द पेपर्स। सो वर्डिंग भी करेक्ट करना बड़ा जरूरी है। शामिर आपके अभी होंगे नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है बेटा, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट्स सॉल्व एक दो क्वेश्चन वैसे मैं क्लास में करवा चुका हूँ, ये लास्ट वाला करते हैं जरा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये मैंने अभी तक नहीं करवाया कभी सॉल्व। सो ये जरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। लेट्स सी। ओके जी, a shop sell plant to customers. The shop manager has relational database to keep track of the sales, like plant, customer, purchase item. Primary keys are also being defined. Fine. अभी बोले बच्चों, you need to define the first stage of the database is not normalized. So 0 से first normal form में, this is called 0 to 1NF. और second stage is 1NF to मतलब second normal form. And third stage is second to third normal form. Removing of partial dependency. तो बच्चों that is 1NF से आपका database मतलब second normal form अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है। रिमूविंग ऑफ एनी रिपीटिंग ग्रुप ऑफ दैट इज आपका डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ रहा होता है। एंड नॉन की डिपेंडेंसी दैट इज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म दैट यू वांट टू अचीव। नाउ वो बोले बच्चों रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट करो। सिंपल सी लॉजिक बताई हुई है, जहां पे मैनी हो वहां पे, सॉरी जहां पे फॉरेन की हो वहां पे मैनी होगा। सो भाई प्राइमरी कीज मैं अंडरलाइन कर दूं सारी। These are the primary keys that we have. ठीक है, अब फॉरेन की देखते हैं जरा। प्लांट नेम, यस वी हैव प्लांट नेम। तो प्लांट और परचेज आइटम में क्या है? 1 to many बना दो फॉरेन। प्लांट और परचेज आइटम, प्लांट और परचेज आइटम, सो 1 to many। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। कस्टमर आईडी, यू कैन सी कस्टमर आईडी राइट ओवर हियर, एंड यहां पे भी है। तो जहां पे फॉरेन की होगी वहां पे क्या होगा? मैनी। सो कस्टमर और परचेज में क्या रिलेशनशिप बन गई? 1 to many बना दो। कस्टमर एंड परचेज 1 to many। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा सर मैक का, जहां पे फॉरेन की हो यू जस्ट नीड टू मेंशन वहां पे क्या होगा? मैनी होगा, 1 to many।
परचेज आईडी, प्राइमरी की, यहां पे क्या है, इट विल बी एक्टिंग इसके अंदर, अब ये सिर्फ प्राइमरी की नहीं है, इट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की ओवर हियर। सो परचेज और आइटम, परचेज आइटम में क्या होगा, वन टू मैनी, बिकॉज ये फॉरेन की हो गई, ये प्राइमरी की हो गई। तो परचेज और परचेज आइटम, परचेज परचेज आइटम बना दो वन टू मैनी, एंड वी आर डन बच्चों, 3 marks। Describe the purpose and contents of data dictionary in data DBM। डाटा डिक्शनरी का पर्पस क्या होता है? स्टोर्स मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। सर क्या बात कर रहे हैं आप? सो बच्चों ऑफ कोर्स डेटाबेस में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। अब ये भी तो एक डाटा है कि कितनी फील्ड्स हैं, क्या रिलेशनशिप है, कितने टेबल्स हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टेबल्स, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। तो दिस इज डाटा अबाउट डाटा। मेटा डेटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। अब आप यहाँ पे बता दें कि कौन कौन से कंटेंट होते हैं आपके पास। यू हैव मैनी कंटेंट, कंटेंट्स हम लोगों ने ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखे थे कुछ कंटेंट्स। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ डाटा डिक्शनरी। फिर कुछ कंटेंट्स के नाम बता दें, दैट्स मोर देन फाइन। अच्छा जी, नाउ वो बोल रहे बच्चों, द शॉप मैनेजर uses both data definition language and data manipulation language statements to create and search database. Complete the DML statement to return the total number of items purchased. Total number of items purchased with the purchase ID of this one. Now I need to look in the table. मुझे अब ये टेबल बेटा देखना होगा कि which table I will be opting for. मुझे purchase ID से काम है, मुझे सम करना है items that are being purchased, और दैट्स इट। सिर्फ ये दो चीजें चाहिए मुझे, परचेज आईडी चाहिए और मुझे कितने आइटम परचेज करें मैंने, मुझे वो चाहिए। सो लेट्स सी, परचेज आईडी यहां पर है, लेकिन यहाँ पे मैंने कितने आइटम परचेज करें ये नहीं है। परचेज आईडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्वांटिटी कितने आइटम परचेज करें, क्वांटिटी यहाँ पर है। सो आई वोंट बी ऑप्टिंग फॉर परचेज टेबल, आई विल बी ऑप्टिंग फॉर परचेज आइटम टेबल। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, यू नीड टू पिक दीज स्टफ। तो परचेज आइटम का टेबल पिक करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी को सम अप कर लूंगा, दैट्स इट, टोटल सम आ जाएगा मेरे पास। तो सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम परचेज आइटम वेयर परचेज आईडी, वो लिखा हुआ कैसे देख लो जरा मैं, परचेज आईडी, परचेज आइटम, अच्छा अंडर स्कोर करके, हाँ वैसे ही लिखा मैंने। परचेज आईडी इज इक्वल टू 3011A। अब आप लोगों ने, बच्चों ने क्या करते हैं, बच्चे जनरली ये लिखा है, इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं बनाए। तो भाई यू हैव टू, बिकॉज नंबर्स भी और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, बार चार्ट डेटा टाइप है इसकी, तो यू नीड टू ड्रॉ दिस क्या कहेंगे इसे, मैं भूल ही गया इस इन सिंबल को क्या बोलेंगे। कोई बच्चा मुझे जरा जल्दी से चैट ऑप्शन में लिख के बताए। भाई कोई भी बता दे जल्दी से। कॉलन, कॉलन तो नहीं, मुझे नाम क्यों नहीं क्लिक कर रहा इसका। कोटेशन, यस। तो कोटेशन आएगा भाई यहाँ पे, कोटेशन से, यस बस याद आ गया। कॉमा नहीं है भाई, प्लीज ये कॉमा वाला कौन है, जरा इसको मैं, मलिक, जबरदस्त बेटा, मलिक बताया सर कॉमा।
ठीक है सर, कोटेशन, तो कोटेशन के अंदर सिंगल या डबल के अंदर आप लोगों को इसको इंक्लूड करना है। अच्छा जी, राइट डाउन द डीडीएल स्टेटमेंट टू इंक्लूड अ फील्ड, एक फील्ड इंक्लूड करनी है इन द टेबल परचेज, डेट ऑफ ऑर्डर। सो alter whenever you want to add a field, so alter table purchase, add date of order, date of order, and the data type of course will be date, end of line statement. We are done, 3 marks. So इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पास मेमोरी क्वेश्चन सॉल्व करे ऑफ डेटाबेस। अब आप भी जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहे, मल्टीपल 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, सी द मार्किंग स्कीम, अगर मार्किंग स्कीम से भी समझ में ना आए तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में या ईमेल आप कर सकते हैं मुझे, सो आई विल आंसर योर क्वेरीज बेटा। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, जितने ज्यादा पास पेपर्स कर सकते हैं उनको सॉल्व करें। रिवीजन गाइड इज अवेलेबल, उसको रीड करते रहे, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा, रिवीजन गाइड को जितना ज्यादा रीड कर सकते हैं उसको रीड करें। ठीक है, ताकि आप लोग की राइटिंग स्किल्स शार्प हो, टू द पॉइंट बात करना आप लोग को आ जाए। और आई थिंक दैट्स इट, आज को ये तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। हसीब, यस आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ एज वेल, मैं अभी कर देता हूँ।